This conference will now be recorded. Up to have an honor to recite few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تذليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Jazakallah Hafiz Shida Sab. I would now call Dr. Nasir Chaudhry, who is General Secretary OSP Lahore, to say a few welcoming remarks, and then Dr. Iram will moderate the session. Thank you very much, sir. This is overwhelming to be here, and I would like to extend my deep gratitude to Honorable and Worthy Chairperson, Department of Ophthalmology, Professor Dr. Atif Mansoor, and then well supported by young and passionate faculty, Dr. Iram, Assistant Professor, Dr. Sumaira, and Dr. Zaima, and still an integral part of faculty of Sheikh Zayed, Dr. Mamuna, and Major Shahid Saab. And my worthy teachers, Professor Dr. Salim Akhtar, our young professors, Professor Hamera Aman, Professor Shabana, our Joint Secretary, Mia Saab, Brigadier Tariq Shakur Saab, Arshad Saab, and Professor Hamad Bhatt Saab. He is one of the pioneer medical educationist and important pillar of ophthalmic research and education firm. He is the main person behind innovative teaching and assessment strategies in our ophthalmic perspective, and he will be the guest speaker today. And then prestigious gathering from different institutions of the Lahore. As we know, the professional societies are believed to play a significant role in belovedness and professional development of its member. So OSP Lahore has uplifted a research culture in the country through the introduction of Impact Factor Journal (PGO) and then resident research papers. We have for the professional development of our young faculty member, the leadership in medical education and medical education sessions, and then quiz, wet lab, simulations, live surgery for the residents, young ophthalmologists, and the people working in the remote peripheries. So these clinical meetings are basically sort of formative assessment, which allows you to reflect your weakness and refine them for the summative assessments. So before going to start the proceeding, and OSP Lahore has always a tradition to give some souvenirs to the top four presenters. And I would like to request Brigadier Tariq Shakur Saab, Mia Arshad Saab, and Professor Dr. Salim Akhtar Saab. They will be judges for these presenters. So now I would like to request Dr. Iram to proceed the further presentations of this scientific session. Thank you, Dr. Nasir. Assalamu alaikum, everyone. I am Dr. Iram from the Department of Ophthalmology, working as assistant professor here since long. So I welcome you all on behalf of our department. And to start with the proceedings, I would like to call our first presenter, Dr. Sumaya Baloch.
Assalamu alaikum and good morning, respected doctors. I am Dr. Sumaya Bilot. I am a second year postgraduate resident in the Department of Ophthalmology in Sheikh Hospital, Lahore. I hope you all are well and enjoying the monsoons of the season. Let's start with this case. Bismillahirrahmanirrahim. This case is about a rare vein threatening syndrome. The patient, she was a 30 years old female. She was resident of Lahore and she was a mother of three children. She presented on April 24 in the Department of Ophthalmology. Her complaints, her presenting complaint mainly were blurring of vision in both her eyes that she experienced for last 2 months. The blurring was for both near and far. The patient had severe headaches for the last 2 months. In history of present illness, she presented with history of severe and recurrent headaches that were on and off for the last 2 months. The headache, it was frontal, it was not associated with nausea and vomiting. However, it was associated with vertigo and tinnitus. There were two episodes of vertigo that had occurred in the last 2 months. For tinnitus, she said that it was always associated with whenever she had the headache, she experienced tinnitus. History of present illness, she developed the blurring of vision of both her eyes, which aggravated in 4 weeks, accompanied by periorbital pain, watering, redness, photophobia, and flashes of light. Past history, the patient had similar symptoms 6 to 7 months ago, and she was taking non-steroidal anti-inflammatory drugs for the headaches, and she had no improvement in her symptoms. She had bilateral decrease that was progressive, bilateral decrease of vision that was progressive. She also complained of generalized fatigue and joint pain that she was experiencing for the last 6 months. She consulted for her eye problems in a tertiary care hospital, and when she presented to us, she was already taking her treatment for uveitis. Past history, her past medical, surgical, and personal history was insignificant. Physical examination, the patient was vitally stable and she was afebrile. Her physical examination was unremarkable. On ocular examination, her vision was hand movement in the right eye and it was counting fingers in the left eye, and there was no improvement on pinhole. Ocular examination, her extraocular movements were full. There were no visible proptosis, there was no lid abnormality, no lacrimal pathology was seen. She did not appreciate any color vision. Pupils were sluggish to react on torch. Slit lamp examination of the patient. The slit lamp examination of the patient, it showed bilateral circumcorneal congestion was present along with various keratic precipitates in both her eyes. Pupil was sluggish to react in both her eyes. There was moderate flare present. AC had reaction. The anterior chamber was full of cells. There were +3 cells in the right and +4 cells in the left eye. The lens, although there was flare, but the anatomy could be seen, so the lens was almost clear. There was no cataract. The iris was normal. There were no nodules. There were no iris atrophy or any abnormality seen on the iris. The intraocular pressure of the patient was normal. It was 10 in the right and 12 millimeter of mercury in the left eye. Fundus examination of the patient. Dilated fundus examination was performed, which showed bilateral vitreous haze that was almost grade 2. Macula. There was clinically significant macular edema present in both her eyes. Nasal disc margin blurring was present bilaterally. On periphery, however, there were retinal pigment epithelial clumps, Dahlen-Fuchs nodules, seen in the superior quadrant of the right eye, along with inferior exudative retinal detachment. In the left eye, the RPE clumps were not seen, but however, the inferior retinal detachment was present in the left as well. Differential diagnosis. Based on the history and examination finding of the patient, we had differentials. Our first differentials was Ward-Koyanagi-Harada disease, sympathetic ophthalmitis, infectious causes of uveitis like tuberculosis, syphilis, viral, etc. Non-infectious causes that included sarcoidosis or systemic lupus erythematosus. Posterior scleritis and least likely lymphoma. Now we proceeded with the investigation.
We ordered an OCT macula that showed bilateral exudative retinal detachments in the eyes. Another OCT was also advised with similar findings. There was bilateral exudative retinal detachment in the eye. To confirm, the B scan was performed. This is the B scan of the patient. It also showed retinal detachment in both the eyes. Labs. Her serum angiotensin converting enzyme levels were slightly high. The HP was low, the patient was anemic, her TLC was raised on the upper limit, and the ESR was high, the CRP was high, LFTs and RFTs was normal. The serum, the quantification for TB and treponema pallidum was done, and that was negative, and ANA was also normal. These are some of the investigations of the patient. This is the MRI brain that was ordered, and that was normal. Chest X-ray of the patient was done. Both lungs were clear. There were no hilar lymphadenopathies. So our diagnosis was probable Vogt Koyanagi Harada disease. How we made the diagnosis? It was based on the history and examination findings, bilateral exudative retinal detachment of the patient, systemic associations, and normal neurological investigations. Acute bilateral panuveitis was present. The diagnostic criteria of this disease. The American Uveitis Society, its diagnostic criteria for VKH syndrome, it includes three components, which is complete, incomplete, and probable. The criteria depends on the following factors. Number one is no history of penetrating ocular trauma, including surgery. Second is the absence of other causes of ocular diseases. Third is bilateral chronic uveitis. Fourth is neurological and auditory manifestations. And fifth is the integumentary signs that present with cutaneous findings of alopecia, foliosis, and vitiligo. According to this, the complete VKH is when all of these are present from criteria 1 to 5. Incomplete VKH, when criteria 1 and 3 are being followed, and either 4 or 5 must be present. Probable VKH, it is an isolated ocular disease. 1 to 3 criteria must be present. So this case that we have presented, it is a probable VKH. The treatment was followed and the multidisciplinary approach was taken. Consultation from rheumatology department for opinion. Physical examination was done of the patient. The chest X-ray that was requested was normal hilar lymph nodes. Patient was also consulted with ENT for tinnitus and hearing loss. Patient consulted with neurology department where the lumbar puncture was advised to the patient, but the patient refused LP because it was an invasive procedure when she was taken consent, so we don't have the LP. MRI brain and orbit was requested. That was normal, and the treatment started again. Treatment was given, systemic treatment was given by dermatology department. It was started with intravenous methylprednisolone, 1000 milligram for 3 days. Then it was given oral prednisolone that was given 80 mg per day, and then it was tapered off. Methotrexate was started to the patient. She was given omeprazole and folic acid with calcium and vitamin D supplements. On follow-up visit, she was added cyclosporin, 100 milligram BD. Ocular treatment. Patient was started a prednisolone eye drops 2 hourly, cyclopentolate, napafenic, and she was also given posterior subtenon injection of triamcinolone in both her eyes. Response to treatment. After the treatment, patient was on regular follow-ups. When she presented, the headache was resolved. Periorbital pain and photophobia were improved. Vision, although slightly improved, it was 660 in right and 636 in left eye. The AC reaction was decreased. There was +2 cells in both her eyes. Macular edema was settled. It was not, there were no signs of clinically significant macular edema. OCT macula was requested. The OCT macula, it showed improvement. FFA was also advised. This is the right FFA of the patient showing multifocal hyperfluorescent areas with subretinal pooling. This is the right FFA and this one is the left FFA, and this also shows multifocal hyperfluorescent areas with subretinal pooling. This is the recent MRI of the patient done now. This shows normal morphology of brain and orbit.
However, there is a suspicion of optic neuritis in the MRI plan of the patient. Currently, the patient is on regular follow up for the monitoring of the disease progression in coordination with rheumatology and neurology departments. As we know, the integumentary signs they develop later on when the disease is in the next phase. So, could it be it could be have done incomplete or complete if we follow the patient further? Thank you. I would like to call our next presenter, Dr. Khadija. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, respected doctors and mentors. I am Dr. Khadija Junaid, and I will be presenting a case on orbital varix, a rare cause of unilateral exophthalmos. My patient, 34-year-old male, a government employee by profession, first presented to the OPD on the 20th of March this year. The presenting complaints of my patient was bulging forward of left eye in the dependent position for the last 2 months. He also complained of on and off bulging of the eyeball. The bulging was aggravated on bending forwards, straining, coughing, sneezing. It relieved itself spontaneously. No systemic signs or symptoms were present. Further probing revealed no history of fever, redness, nausea, vomiting, no trauma, or any diplopia. There was no significant past ocular, medical, surgical, or family history. Socioeconomic history was also insignificant, and so was the personal history. General physical examination revealed a calm patient sitting comfortably. There was no visible goiter or any apparent thyroid swelling, no tremors, no sweating, neither was the patient agitated. My patient was vitally stable and he had a normal weight with a normal build as well. Central nervous system, cardiovascular, gastrointestinal, and respiratory examinations were unremarkable. Ocular examination revealed axial proptosis. This clinical sign was elicited by Valsalva maneuver and bending of the head downwards. Retropulsion was positive. The proptosis was reducible, non-pulsatile. No bruit was heard over it, and the bony orbitals were completely normal. Ocular examination also revealed a best corrected visual acuity with myopic correction of 6 by 6 in both the eyes, and the patient's near vision was unaided. Extraocular movements, color vision, and intraocular pressure measuring applanation tonometry were also within normal limits. Proptosis examination was done using Hertel's exophthalmometer before eliciting Valsalva's maneuver and after eliciting Valsalva's maneuver. Before eliciting the maneuver, the readings in left and right eyes were not significant. However, after eliciting the maneuver, the reading in the left eye significantly increased by 6 millimeters, making it to a total of 24 millimeters, which was significant clinically. Slit lamp examination of the adnexa cornea lens pupil was absolutely normal. Fundoscopy revealed a normal CD ratio of both the eyes, disc margins clear, macula healthy, and the visual fields were intact bilaterally. Some investigations, such as the complete blood count and thyroid function tests, were done, which also came out normal. On the basis of history and examination, a differential diagnosis of orbital varices, neurofibroma, optic nerve glioma, cavernous hemangioma, AV fistula, and lymphatic malformation was made. The patient was further advised radiological investigations to come up with a provisional diagnosis. B-scan revealed an intermittently anechoic retrobulbar lesion with intrinsic flow during the Valsalva maneuver indicative of a varix, and the impression of a varix in the superior intracorneal space was made. CT scan of the brain was normal, and CT scan of the orbit was consistent with the findings already found on the B-scan, uh, including slight proptosis, a normal eyeball, and no muscular involvement was noticed. This is a picture of the CT scan in the sagittal plane.
And we can notice in the left eye, a retrobulbar mass is present. MRI brain and orbit were also advised, and mass effect was evident as displacement of optic nerve in lateral rectus and expansion of intraconal fat causing proptosis. The fat plane between mass and lateral rectus was indistinct, and the optic nerve was separable from the mass. The impression revealed findings consistent with a neurofibroma. The patient was advised MRA in supine and prone position that revealed irregular clumps of serpiginous signal void area in the retrobulbar region. Correlation with Doppler ultrasonography showed increased engorgement of venous channels in the sitting position as compared to the supine position. An impression of left-sided orbital varices was again made. MRV was also suggested, which revealed normal extraocular muscles. Sulcine ventricles were normal. No mass effect or parenchymal edema was made, and a normal appearing optic nerve with no venolymphatic malformation was concluded. On the basis of history examination and all the radiological investigations mentioned in the prior slides, a final diagnosis of orbital varices was made. The patient was nicely counseled about how there could be a volume increase. It could progress to thrombosis, which could be a fatal complication, or there could be a hyperplastic complication. Orbital varices could be primary, they could be secondary, they could be idiopathic. The secondary orbital varices come with complications such as fistulas. They could be carotid cavernous, dural, or intracranial. This is a slide of a fistula showing the histological pattern. It's an endothelial lined vessel containing areas of engorgement, tortuosities, and inflammatory fibrosis. For the management, the patient was kept on conservative management mainly for pain relief. There were no contraindications, so low dose anticoagulant for thrombosis was started, and strict surveillance with monthly follow ups was advised to my patient. Treatment options include surgical intervention and some more, which we will discuss in the next slides. That include non-resolving episodes of thrombosis, disfiguring proptosis, optic nerve compression, acute orbital hemorrhage, and intolerable pain. Fortunately, our patient had none of these indications, so he was kept completely on conservative and symptomatic treatment. The treatment options currently include surgical resection, and it is a very rewarding treatment option if the varix is confined to its place and does not involve the nerve. Endovascular embolization via the jugular route or the cavernous route. Percutaneous N-butyl cyanoacrylate glue embolization. Percutaneous alcohol sclerotherapy. This is not advised for deep varices due to leakage complications. And carbon dioxide laser surgery ablation. So the take home message is that orbital varices will present unilaterally like exophthalmos, and they will be best elicited on Valsalva's maneuver that will differentiate them from other differentials. They could be congenital or secondary. And in the absence of complications, our patient will be kept only on conservative management. And it should be noted that recurrence rate is present. They do recur in the patients, so follow up is very important. These are some of the references that we took to compile our presentation. Thank you so much for listening. I would like to now invite Dr. Moila for her presentation. Thank you.
Up till now, as the patient only presented a couple of weeks back, so up till now, the patient was sent to the tertiary care in the care of a vitreoretinal. He was given one intravitreal injection, bevacizumab, in right eye in 28/6/2024. He is going to be followed up by our department and also the tertiary care department. Definitive treatment is definitely photodynamic therapy, um, which is which is not available at the moment. We are, however, following up the patient, so I hope we will be doing that later on. Okay, the important thing which we have to see in the patient is the monitoring. We have to monitor the visual acuity, color vision, fields, OCT, and fundus photography, so we can try to track the changes in the lesion and the size. The most important thing of this case is you have to educate the patient and consult the patient, and you have to tell him how serious his condition is and what other future impact it can have on his life. Prognosis is generally good if there's shallow detach, there are no complications, and if it's generally visual acuity is normal, visual acuity is like 20 by 30 or 6 by 24, like in this case, then the visual prognosis is really good. We have to do the appropriate monitoring and treatment to manage the symptom and prevent complications. Now I would like to introduce this case a little bit of the literature review of this case. Choroidal hemangioma is a rare hematoma. It's a benign vascular disease. It's a quite uncommon disease even in our country. There are two clinical forms. One is diffuse and the other is circumcised. डिफ्यूज फॉर्म में यू सी द फंडस आपको वहाँ पे डिफ्यूज एक रेडिश ऑरेंज अपेयरेंस नजर आएगी विच इज आल्सो कंसिस्टेंट विद द सराउंडिंग कोराइड and the diffuse is associated with Sturge-Weber syndrome. For those of you who don't know what is Sturge-Weber syndrome, it is basically a neurological disease which presents at birth. आप लोगों ने port wine stain का अक्सर सुना होगा. It is characterized by port wine stain on the side of the lesion. जिस side पे lesion होगी उसी side पे तो अगर जिस side में brain के symptoms आ रहे हैं उसी side पे आपको lesion भी मिलेगी. Why it is there? क्योंकि वहाँ पे जो vessels हैं उनकी overgrowth हुई होती है. ब्रेन के अंदर वेसल्स की ओवरग्रोथ हो सकती है या फिर आपके पास जो ट्राइजेमिनल एरिया है उसके अराउंड वेसल्स की ओवरग्रोथ हो सकती है जिसकी वजह से आपको पोर्ट वाइन स्टेन मिलेगा. द पोर्ट वाइन स्टेन इज पिंक. It ranges from pink color to deep purple color. This is diffuse form and the other form is circumscribed form. Circumscribed form is normally dome shaped. It is generally located posterior to the equator, often in the macular area. Two diseases are often misdiagnosed. One is circumcised choroidal hemangioma and the other is amelanotic choroidal melanoma. These are both often misdiagnosed. तो जो मेलानोसिस है ए मेलानोटिक उसके अंदर जो आपको लीजन मिलेगी वो आपको नोड्यूलर मिलेगी. अगर नोड्यूलर ना भी मिले तो आपको वो बी स्कैन के ऊपर ऑकेस्टिकली होलो जो फाइंडिंग है वो मिलेगी एज कम्पेयर टू ऑन दिस. यहाँ पे आपको ऑकेस्टिकली बहुत सॉलिड कलर किस्म का मैथ मिल रहा था बी स्कैन पे एज कम्पेयर टू इन मेलानोमा. तो कोलाइडल मेलानोमा में वी गो फॉर इन्यूक्लिएशन मोस्टली. So you have to diagnose the patient if it is actually choroidal melanoma. Management overall जो in the world की जाती है that is if there are no symptoms at all patient आपके पास most of the cases are asymptomatic. So if patient present to you and it's an incidental finding you just have to follow up the patient. You don't have to do anything at all. So there is no treatment that is required. The other treatment that was used in 1970s that was laser photocoagulation. Before that um, our, nowadays argon laser is used. Before that there was xenon laser that was used. Okay, why are we not using laser photocoagulation these days? Because it causes chorioretinal scarring, which can further जो है वो scotomas and peripheral vision उसका loss कर सकता है. That's why we don't use photocoagulation these days. The first line of treatment, the mainstay of treatment is photodynamic therapy. Anyone जिसको photodynamic therapy के बारे में पता हो? From the residents. Okay. For those of you who do not know कि photodynamic therapy क्या होती है, इसके अंदर आप एक रेटोपोस्फेन एक सब्सटेंस है वो वेसल्स में डालते हो, वो हाईलाइट कर देता है कोआइडल वेसल्स को और वहाँ पे आप 689 नैनोमीटर की डायोड लेजर के साथ हिट करते हो जहाँ पे आपको लीजन मिलती है. ठीक है, and that's how you coagulate the mass, the lesion. Other treatment that are used worldwide are brachytherapy, external radiotherapy methods. Pakistan में brachytherapy is not used. However, there are some surgeons who are
utilizing PDT. And there is very less role of anti-VEGF in this circumcised vital. Anti-VEGF only provides supportive treatment in this case. Okay, I was able to get my hands on this new study that was on Springer. 2024 की study थी. These are all the compiled methods जो अभी use हो रहे हैं recently for circumcised choroidal hemangioma. As you can see, the mainstay, the first line of treatment, first line ideal therapy is photodynamic therapy. If the exudation is less, if the lesion is small, then you can also go for transpupillary thermopathy or photocoagulation. But these are not recommended because they can cause visual defects. Okay, intravitreal injection there is very less useful data. Okay, intravitreal budget का कोई role है, but it is used as a supportive therapy as we have used in this case. Also, there is oral propanol. I wasn't able to find any case studies regarding this, but it was also recommended. It is used as a first line or second line therapy. These are some references that I used in my slide, and I would love to have some questions if there are any. Thank you so much. I would like to call on the next presenter, Dr. Khizra Imran. Thank you so much. Navigate from present to past and unravel the mystery behind his current state. My patient, a 37-year-old male resident of Lahore, presented to the Sheikh Zayed Hospital on 24th June 2024. He was advised admission in the rheumatology ward. He had complaints of nasal and ear congestion along with left eye redness and pain for 4 months. He also had complaint of fever and sore throat for 1 week. The redness of his left eye initially involved the inner corner, according to the patient. He had mild pain, but there was no swelling, foreign body, or photophobia. As this was not his first time experience, he started self-medicating with combination chloramphenicol hydrocortisone eye drops thrice daily. He continued with his daily activities of intercity travel for work and leisure. In due course, the redness of his eye spread from the inner corner to the whole eye, and a similar pattern of redness started to appear in his right eye as well. The severity of his pain increased, which was continuous and localized to the lower outer part of the eye. He experienced dull aching pain, which was unbearable at times. He had to take medication. It was associated with abnormal discharge, which was sticky mucus like. He was photophobic and had foreign body sensation on the outer corner of the eye. At this point, he had discontinued previously using eye drops and he started using moxifloxacin eye drops every hourly. As there was progressive increase in his symptoms affecting the both eyes, he was compelled to seek ophthalmic consultation on 26 June 2024. For the past 4 months, along with the ocular symptoms, he had been experiencing left ear ringing and popping. He had left earache with pus discharge and decreased hearing. The patient also complained of nasal congestion and facial pain. He could feel his sinuses congested near the forehead and the cheek region. There was associated postnasal drip. He had left-sided throatache with low-grade fever. His symptoms were relieved by the use of nasal sprays, antihistamines, and antibiotics. His systemic review was unremarkable. Also, his surgical history was also unremarkable. Moving on to the year 2021, when the patient was at the ripe age of 34 years. He had multiple visits to the ENT department with complaint of epistaxis and sinusitis. He was advised medications, for which he did not respond well. A nasal biopsy was performed and he was diagnosed with granulomatosis with polyangiitis, clinically correlating it with Sianca, which was greater than 200. He was admitted in the rheumatology ward for 1 week, where his workup revealed renal involvement.
He was methotrexate intolerant, so he was given one cycle of injection rituximab, 1 dose per week for 1 month. His discharge medications involved oral steroids and immunosuppressants along with multivitamins. He had been non-compliant with his oral medication since 2023 and he subjected to homeopathic medications. Moving on to the examination, he was a man of lean build with temperature of 101 degree Fahrenheit and raised pulse. Rest of his general physical examination was normal. His best corrected visual acuity was 6/6 and 6/9 of the right and the left eye respectively. His left eye was tender to touch. He had reduced tear film breakup time, reduced tear film height. Schirmer test showed wetting of 5 to 7 millimeter. He had mucoid discharge, and these findings were consistent with his history and indicate a moderate dry eye. Patient was examined in a well-lighted room from a distance, as shown in the picture. He had bilateral hyperemic sclera. Left was greater than right. Slit lamp microscopy showed bilateral tortuous dilated scleral vessels, as shown in the picture. Rest of his anterior segment findings were normal. His IOP was normal, within normal range, and fundoscopy showed no signs of retinal vasculitis. Detailed ENT examination revealed left tympanic membrane retraction and dullness. His Weber's test revealed conductive hearing loss. He had bilateral hyperemic mucosa with nasal crustings. There was left inferior turbinate hypertrophy. His oral cavity was congested and grade 1 tonsils. Rest of his systemic examination was unremarkable. From the history and examination, we concluded that it was anterior scleritis, so no ocular investigations were indicated. But his systemic investigations were as follows. His hematological profile, when compared to 2021 and the current profile, showed persistent leukocytosis, thrombocytosis, and lymphopenia, which is characteristic of his disease. ESR and CRP on day of admission on 2021 and 2024 were markedly raised, but they decreased after treatment with injection rituximab. His urine analysis showed persistent hematuria and proteinuria, indicating glomerular injury. His 24-hour urinary protein value has been improving, but is still well above normal range. His current LFTs and RFTs were within normal range. His viral markers for hepatitis B, C, and TB were negative. Biopsy was performed in 2021, which gave histopathological finding of GPA. This year, it was correlated again with Sianka, which was greater than 400. His CT-PNS nose showed left maxillary sinus thickening and inferior nasal turbinate hypertrophy, which correlates with our previous examination and history. CT temporal bone supports left automastoiditis. HRCT chest shows minimal scarring and air trapping in the left apicoposterior segment. His ultrasound KUB showed grade 3 parenchymal disease. Left was greater than right. 2D echo and MRI brain plane were normal. We finally reached the diagnosis of bilateral anterior non-necrotizing diffuse scleritis. Left was greater than right, secondary to granulomatous with polyangiitis. The multidisciplinary team was involved in the treatment and the follow-up. From the rheumatology consultation, the patient was given 6 doses of intravenous methylprednisolone sodium succinate for 6 days. He also received 1 dose of injection rituximab, which is still being continued. It also includes oral steroids along with immunosuppressants. Ophthalmology consultation involved moxifloxacin dexamethasone eye drops, cyclosporin eye drops, lubricant eye drops, and lubricant eye ointment. ENT consultation involved oral antibiotics, antihistamines, nasal sprays, and mouthwash. The MDT collaboration was successful. The patient's condition improved. He was counseled about his disease, and he was discharged with follow-up. Moving on to the literature review. GPA is a rare autoimmune disorder characterized by inflammation of small to medium-sized blood vessels in various organs of the body, as you can see in the picture. The red box includes the ocular manifestations in which scleritis is present in 40 to 50% of the patient. Necrotizing variety is greater than non-necrotizing variety. Apart from that, we have episcleritis, uveitis, optic nerve vasculitis, retinal artery occlusion, NLD obstruction, and proptosis.
Now, multiple studies regarding the induction and remission in relapsing disease were conducted, one of which states rituximab in conjunction with glucocorticoids demonstrated high level of efficacy in the treatment, and other a study which revealed rituximab compared to the daily cyclophosphamide treatment was superior in choice. One study, it reveals a safe and efficacious alternative to, in case of refractory cases, obinutuzumab is considered as an alternative to rituximab. In conclusion, I state that this case, it reinforces the need for heightened awareness of ocular manifestation in systemic diseases amongst the clinician. It also opens avenues for further research into the pathophysiology and optimal management strategies for GP-associated scleritis. As the patient, he showed improvement after the treatment, it states that we should delve into the situation and we should be open for such challenging cases. I thank you for this presentation. The room is open for questions. Thank you. Now I call upon Dr. Iram. Okay, thank you, Dr. Khesra. Now, for the most awaited lecture on this forum, I would like to request Professor Hamid Mahmood for his presentation. Related to cases presented and command what is possible clinical pattern Let me congratulate first and foremost you as the team leader and then the rest of the faculty. Most of the presentations were mind-blowing, and they are very precise and oh, जिसे कहते हैं comprehensive. The presentation skills were excellent. So were the slides, and I wish success to the residents all the way. these words are very warming to hear from a person who is always educating medical education. So much related to management of cases because that orbital varices that person actually his father is working in our department so he got tested again and again over the years and now the attacks and frequency of attacks are increasing now. So in future we might need some interventional radiologists to be accompanying the treatment options जो कि ज़्यादा invasive हो सकती हैं फिलहाल क्योंकि उसमें कोई ऐसी एड ऑन चीज़ नहीं थी जिसको जिसको हम एड्रेस करें सर्जिकली इट रिजॉल्व ऑन इट्स ओन बट स्ट्रेनस एक्टिविटी के साथ वो से हो रही थी सो ही वाज जस्ट प्रिस्क्राइब कंजर्वेटिव all the presenters had interdisciplinary collaboration. I think we need to develop a culture of referral to other institutions also. So there's a host of oculoplastic surgeons in different institutions, and maybe you can act. The best way to is to actually write them and take the patient with you to one of those orbital surgeons, which are 4 or 5 major authorities are there. Location is very critical. It is lying intracorner Yes. and very close to optic nerve. Fortunately, he has not demonstrated any effect on the optic nerve so far, but that might be. So I think it needs more. It's more 2 or 3 presenters also touch the limits where you do no harm was touched. That dimension is very important. That you hold your hand. Uh, all treatment is not definitive. You don't have to intervene at times, and you have to keep. And that was adequately displayed on 2 or 3 cases, and that buys you time to have more consultation in better interest of the patient. So I think you need to consult the orbital surgeon on this particular case. You can have Mayo, Moeen is there. You can have Zayed Kamal is there. Asad is there. We are always getting excellent response in our institutions. So I have one comment related to that GPA related cholangitis case, and we have at least 3 or 4 cases, series of cases rather,
because our rheumatology department is very efficient and Hello. effective getting the cases from all the Hello. clinical departments in the Lahore. So we are getting these cases, and I have seen the necrotizing type of scleritis here, and that was again very well treated medically. And in follow-ups, he might, I think he went to a corneal surgeon or did a scleral graft or something like that, examination. So we might be publishing a report on that because we have all the evidence available. So we are welcome this. हेलो अस्सलाम वालेकुम Yes, Walaikum Assalam. जनाब क्या Any हाल है question on live? Any comments? I think Javed Choi साहब हैं. जी. हाँ जी बिल्कुल 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 मैं अहमद साहब का लेक्चर सुनने के लिए बड़ी दूर से अपने आप को फ्री करके आया हूँ अच्छा आपके केसेस माशाल्लाह दे वर वेरी गुड एज फार एज ये पोलियंजाइटिस केस इज कंसर्न्ड आई थिंक it was not non-necrotizing scleritis because in polyangiitis there is always necrotizing scleritis and is also life-threatening disease. It does not progress to necrotizing because he is having extensive treatment. I think so. Furthermore, it is also uh, should be kept in mind that such patients, especially children, they have bilateral proptosis. Sometimes it is misdiagnosed as well. Thank you very much. Thank Well, you, sir. I'm sorry कि मैंने आना था लेकिन due to certain reasons I couldn't come there. मैंने इंशाल्लाह next meeting में तो मौजूद होऊंगा लेकिन मैं सिर्फ आमिर साहब के लेक्चर सुनने हूँ. Thank you. जी थैंक यू वेरी मच सर चौधरी साहब अच्छा इसमें क्योंकि बहुत सारे लोग जूम पे भी कनेक्टेड हैं तो प्रोफेसर तैयबा गुल का एक कमेंट था कि एक तो वो अप्रिशिएट कर रही थी कि बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह प्रेजेंटेशन थी एक उनकी सजेशन थी कि जो आप स्पेशली जो वेल सल्वा मैन्यूवर से रिलेटेड स्पेशली जो पेशेंट की कंसेंट के साथ पिक्चर्स आप बीच में ऐड कर लेते हैं ठीक ठीक है तो बाकी जिस तरह सर हामद साहब ने बात की कि कोई भी किसी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है इंटर सर्टन वेरिएशंस हो सकती हैं जिस तरह मोल्ला ने बात की तो उसमें जिस तरह देखें हमारे पास पीडीटी के लिए जो मेजर जो ऑप्थेल्मोलॉजी में डोमेन थी दैट वाज सीएसआर जो कि अब हम देख सकते हैं कि जो एंटी माइंडालो कार्टिकोइड एक्टिविटी की वजह से रिफेम्पिसिन है या स्पायरोमाइड है उन्होंने जगह ले ली है ठीक है और इसी तरह अगर आप एएमडी में बात करें उसका रोल था लेकिन आपके जितने मरीना एंकर हार्पर हॉक एंड हारियर से ट्रीट एंड एक्सटेंड ठीक है वो उसमें पीडीटी निकल गई है जो आपके एंटी वीजीएफ सुपीरियर है इस तरह पीसीवी में पॉलीपाइडल पैराइडल पैथवे में इसकी जगह थी पीडीटी की लेकिन वो प्लानट ट्रायल हुआ भी रिसेंटली तो उसने कहा जी कि जो आपका एंटी वीजीएफ है दैट इज इक्वली बेटर एज रिगार्ड ऑफ पीडीटी तो ये क्राइडल हेमेंजियोमा में ऑफ कोर्स इसकी स्पेस बनती है दैट इज कंपेरेबल के पीडीटी के कह रहे हैं जी कि इज सुपीरियर लेकिन एंटी वीजीएफ हैज स्टिल हैज प्रॉमिसिंग रिजल्ट उसके भी बहुत सारे जो ट्रायल्स हैं स्प्रिंग जो उसके अलावा बहुत सारे जो वो कोट करते हैं कि जो एंटी वीजीएफ स्टिल हैव सम गुड रिजल्ट्स इन दीस केसेस और बाकी एक जो चीज था कि वो 28/6 को लगा था जो बेसिलुमैब है क्योंकि हम इसके बड़ा पीछा कर रहे हैं बेसिलुमैब का वो किस जगह लगा था किस हाजिर We are not allowed. उनके कोई रिलेटिव ब्रदर या somebody working in army so he took him there. वो initially हमारे पास हुआ इन्वेस्टिगेट हुआ डायग्नोज भी पैन पर हुआ बट देन वो एंटी जी वो आप इधर दोनों जगह पे फॉलो अप करते हैं यहाँ पे भी आते हैं वो ट्रीटमेंट उन्होंने वहाँ पे करवा ली जहाँ पे ऑप्शन मिली and he also had macular edema for that anti-VEGF also was. Any other comments? So I'm seeing quite a few residents. If they are having any queries regarding the cases, we would be happy to answer. So if there are not any, I would proceed to much awaited lecture of Professor Hamid Mahmood Bad. He is one of
the leading person and force behind the motivation of teaching in ophthalmology. He is a member of ORI, which is the Ophthalmic Research Foundation. He is also team lead for development of workplace-based assessment in ophthalmology. Thank you very much. When the expectations are high, then you are under a lot of stress to perform. But it's a unique privilege and honor for me to be here. Yes, lights. I think I have half an hour, so I'll try to be as brief and as to the point as possible. First and foremost, it's a very emotional moment for me standing here with the very senior teachers sitting in the front row, Professor Salim Akhtar, being faculty of the start of Sheikh Zayed Hospital, Federal Postgraduate Medical Institute, and my immediate registrar, Dr. Memuna, still watching very intently and carefully, is very young Dr. Memuna. To the residents of Sheikh Zayed, I was a resident here with Professor Jahangir Durrani. I dedicate my talk to my teachers and mentors. One of the very important slide picture I couldn't find. If somebody has it, kindly do pass it on to me, of Professor Dr. Iftakharul Haq Qureshi sir. I've requested so many people to pass it on to me. So Professor Jahangir Durrani was my teacher, supervisor. He taught me ophthalmology, led me by hand. Uh, and then after my public service commission, I came under the noble supervision and mentorship of Professor Wasim Mohiuddin Qadri. And when I became an associate, I had the good fortune of working with Professor Afzal Chaudhry Saab. Huge personalities. You are always indebted after your parents to your teachers. They're actually your professional parents. That is the way I look at it. Professor, I was fortunate. Professor Jahangir Durrani had 25 years plus of American ophthalmology, and Professor Iftakharul Haq Qureshi Saab had 25 years plus of British ophthalmology. So I was very fortunate to have the best of the best during my initial training years. And in those times, part one was a rarity because Vive wala part one hota tha. So I was a one-on-one. I was the sole trainee. That's how the training program started here. The training models are either apprenticeship-based models or process-based models or competency-based models. तीनों मॉडल्स का ब्लेंड चलता है कोई भी none of the training models works to the exclusion of the other. Apprenticeship based model is the traditional model. आपका एक उस्ताद टीचर सारी उम्र आप उसके साथ चलते हैं, हाथ पकड़ के आपको वो सिखाता है, बट टाइम पार्ट नहीं है. वो उस्ताद कह देता है कि जी बस अब you are good to go. So but with industrialization now you have a process based model. आपको एक जनवरी में इंडक्शन होती है एक साल, and then 4 years down the line you exit from or graduate from the program, and this is the process based model. In the process it is hoped कि आप आउटडोर में जा रहे हैं, वार्ड में जा रहे हैं, थिएटर में जा रहे हैं, आप सारे काम कर रहे हैं, तो in the you will become a good competent ophthalmologist, which you do, and this is the process based model. But the world is now talking of competency based model, and that is कि आप ट्रेनिंग के अंदर काम क्या कर रहे हैं और उस काम पे आपको फीडबैक और कोचिंग हो रही है कि नहीं हो रही. That is the challenge of what we had to face at the policy level. So these are the different models. I'll not go into the details, but that is something for a medical education forum. But do remember that the ACG, if you go to the American residency training program, you're talking of ACGME. If you go to Canada, you have the CanMed's roles model. And if the College of Physicians and Surgeons has its own model of competency with patient care at the center, patient care at this here. And actually you have to have a professional person who is competent to take care of the patient. And these are ये खवास हैं, qualities हैं of a competent surgeon, physician. They are generic competencies. चाहे आप gynecologist बन रहे हैं, ophthalmologist बन रहे हैं, ENT surgeon बन रहे हैं, internal medicine में, this language is spoken throughout the training program for all the trainings.
So what is competence? Competence is the ability to do something well. That is competence. And it involves a combination of knowledge, skills, and attitudes. And therefore, such competencies are observable and therefore measurable. आपने कोई मरीज देखा, आउटडोर में देखा, प्रेजेंट किया, कोई सर्जरी की, all these are tasks that you perform as a competent person. That is the spirit of the activity. So the competencies can be assembled like building blocks to facilitate progressive development. और अब एक कॉन्सेप्ट आजकल दुनिया में जो बोला जा रहा है वो है entrustable professional activities. And the two are not mutually exclusive. The two are a combination or a blend. एक अच्छे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को कॉम्पिटेंट भी होना है और उसको इंटरेस्टेबल भी होना है. लेट मी टेक द कॉन्सेप्ट. आपने किसी का फेको करवाना है, आपने वालदा का, वालिद का, तो आप थोड़ी देर के लिए सोचते हैं यार मैं किससे करवाऊं, एक फैसला करते हैं ना. दैट कॉन्सेप्ट इज ट्रस्टेबिलिटी. आप उस बंदे को ट्रस्ट करते हैं. वो उसने सारी जिंदगी में ओवरनाइट नहीं किया, उसने सारी जिंदगी में एक स्किल लेवल अटेन करके एक इंटरेस्टमेंट का लेवल अचीव किया है. एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्टेबिलिटी. आर यू विद मी ऑन दिस अप टिल नाउ? सो कॉम्पिटेंसी इज पर्सन डिस्क्रिप्टर. मैं बहुत कॉम्पिटेंट हूँ या आप बहुत कॉम्पिटेंट है बिकॉज यू हैव ऑल दोज क्वालिटीज. आपके पास मेडिकल नॉलेज है, प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग है, सिस्टम बेस्ड प्रैक्टिस है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, प्रोफेशनलिज्म है, तो आप पेशेंट केयर कर रहे हैं. एंड देयरफॉर दिस इज व्हाट अ कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क इज. EPAs are descriptors of the work or the tasks that you undertake throughout your training in the outdoor ward, theaters, and in those environments. This, can you recognize this? What is this? It's a crown. But what? It's a lost jewel in the crown. That is what we claim, and that is rightfully belongs to us. Assessment is the jewel in the crown. Sidri. So the dimensions of assessment are two: summative or formative assessment. This is the classical Miller's pyramid of assessment, which is shared always in terms of knows, knows how, shows how, and does. Knows and knows how is checked by MCQs. And the MCQ test, and you're always been facing the MCQ examination as part of your assessment. And then you have OSPs and OSCEs. ये सारी technology हमारे ज़माने में तो नहीं थी. We are the product of long essay questions, Viva, but all this technology has evolved over a period of time. So the does is the dimension which is at the top of the pyramid,
and that is what you are doing in your everyday practice. वहां पे हम 4 साल में कोई assessment tool नहीं है as such. हम ट्रेनिंग के अंदर ऑस्पी नहीं करते, हम ट्रेनिंग के अंदर टॉक्स नहीं करते, कोई शॉर्ट लॉन्ग केस नहीं दिखाते, एंड दैट्स अ बिग डेफिशिएंसी. हम इस उम्मीद पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कि आखिर में एक बहुत अच्छा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बन जाएगा. दैट इज द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द सिचुएशन. इसको कैसे वर्ल्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन कैसे एड्रेस कर रही है? दो एरियाज जो अभी हमने अभी डिस्कस किए हैं, ऑल दीज एमसीक्यूज, ऑस्पीज, शॉर्ट केसेस, लॉन्ग केसेस, दिस इज द डोमेन ऑफ assessment of learning. We want to shift to assessment for learning, and this is what is known as formative assessment vis-a-vis summative assessment. इसके बारे में if I ask one of the residents जो अभी जिन्होंने present किया, you are one of the can you recall और मैंने अभी क्या कहा है, assessment for learning क्या होती है और assessment of learning क्या होती है? Assessment for learning पहले. Okay, and assessment of learning, और कौन सी रेजिडेंसी ब्राइट जिन्होंने प्रेजेंट किया अभी आप बताएंगे? So there are two technologies of assessment that we are talking. एक जो आप पार्ट 2 के एग्जामिनेशन में फेस कर रहे हैं और एक हमने ट्रेनिंग में इनकॉर्पोरेट करनी है. So that is the challenge of the talk and that is what is known as work based assessment. Assessment of learning जो है ना वो है हाई स्टेक्स. इसमें और एक दफा हम वो कहते हैं ना जो पास हो गया इज लाइसेंस्ड. अगला जुमला मैं नहीं बोलूंगा, लाइसेंस टू डू व्हाट. इतनी बड़ी जब हम पार्ट 2 का एग्जामिनेशन जहां अपना मुझे ले गए वासिफ साहब, आई वाज एलिवेटेड फ्रॉम बीइंग एन ऑब्जर्वर टू ए एग्जामिनर, एंड सडनली आई रियलाइज्ड कि यार if I clear this chap and if declared him competent, it's such a big decision that he is going to be a certified, qualified, licensed ophthalmologist from this day onwards. So that is why this is what you mean by high stakes. लेकिन जो formative assessment है, that is not high stakes because it is low. There is no pass and fail. In my part 2, in my membership of the College of Physicians and Health Professions Education, हमारे एक facilitator थे, kind of a very big surgeon. वो उन्होंने presentation जब शुरू करवाई हमसे, case presentation during the interaction, तो I made उन्होंने कहा जी फॉर्मेटिव असेसमेंट पे बात करते हैं. तो मैंने ऐसे ही ओपनिंग स्टेटमेंट के तौर पे कहा, क्या जिंदगी में कोई ऐसा इम्तिहान हो जिसमें आपने पास और फेल ना होना हो, तो कितना ही अच्छा इम्तिहान हो. तो उन्होंने कहा कि फॉर्मली आप तो बैठ जाएं क्योंकि यू नो मोर देन the person that I am going to talk about this topic. So there is no pass and fail. आपने सिर्फ उसको मल्टीपल एनकाउंटर्स में फीडबैक देना है कि बेटा ये काम आपने इस तरह, ये गैप है आपका. अब वो जो challenges है इसके, we will talk about those challenges shortly. So what is workplace based assessment? By definition, what the healthcare practitioners actually do in practice, and then the provision of feedback to improve their performance, and that is what is known as assessment for learning. So how did we approach this challenge presented to us as trainers, policy planners, and strategic vision development team? कोई भी चेंज जिंदगी में लाने के लिए ना सबसे पहले यू हैव टू हैव अ विजन. मैंने करना क्या है, फिर आपने उसके बाद फैसला करना है कि मैंने वो करना कैसे है. यू कैन नॉट डू इट अलोन. आप अकेले जिंदगी में कोई काम नहीं कर सकते. पहली तो सबसे हम्बलनेस की पहला जो सीढ़ी है ना वो ये है कि आप अकेले कुछ नहीं, जितने मर्जी आप कॉम्पिटेंट हो, अच्छे हो, लायक हो, अनलेस यू हैव पीपल हु आर as committed and as knowledgeable with you as a team and as a group, you cannot function. And this is something that we doctors specifically lack. उसकी वजह ये है कि हम सारी जिंदगी मौत के फैसले आपने खुद अपने पैरों पे खड़े होने के करने होते हैं, अपने डिसीजंस आपने खुद करने होते हैं. लेकिन जब आप कोलैबोरेटिव एक्शन प्लान में जाते हैं तो यू हैव टू लुक एट द अदर पर्सनस व्यू आल्सो कि वो क्या कह रहा है.
और उसकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है और उसकी वीकनेस क्या है, आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को मिलाना होता है आपस में. सो इन दैट स्पिरिट we had a strategic implementation team. I'm very, very happy to share here Professor Carl Golnick. He's been coming here to Pakistan for the last 5 years now. He's a leading medical educationist. If you go on the net and you find out he's from the University of Cincinnati, he's basically a neuro-ophthalmologist and he's a qualified medical educationist. He travels all around the world. पाकिस्तान में पिछले 5 साल से ही मुसलसल ये आ रहे हैं इन ऑल और ऑप्थेल्मिक ओएसपी मीटिंग्स. बल्कि इनके बारे में जोकिंगली हम ये भी कहते हैं कि ये अब इनको पाकिस्तान की सिटीजनशिप दे देनी चाहिए. The best part of the consultative meeting was that we sat the whole day on the sidelines of the International Conference on Medical Education 2023, and we asked ourselves 3 questions. With let me introduce the other 2 persons here. Huge Professor Moeen, who is the head of the King Edward Medical University now, the head Department of Ophthalmology, and he's the Pro Vice Chancellor now. I'm so happy to have him as an elevated position. And then General Mazhar, who's a college counselor. He was the driving force of bringing all of us together. And then we sat with these 3 questions. कि जो WBs हैं, ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जो 4 साल में हमने करनी है, इसको हमने करना कैसे है और कौन-कौन से टूल्स हमने इंप्लीमेंट करने हैं. एंड देन the other thing which about the college is the faculty of ophthalmology. आप जो भी पॉलिसी प्लानिंग करते हैं वो faculty of ophthalmology के अंदर पहले जाके it is converted into a documentation and then it is converted into your e-log जो आपके face पे आती है. So there's a lot of planning which is happening at the back from various fora, the college council, the faculty, Department of Medical Education and Department of Information Technology. अब उसको हम थोड़ा सा टच करते हैं इसकी implementation में. The previous dean, I was the dean for about 4 years from 2010 to 2014, and then previous dean Professor Zayed Kamal, the current dean Professor Mir Ali Shah, and the current secretary Professor Khaja Khalid Shoaib had a huge role to play to give us a feedback. अब challenge हम आपसे interact, अब जरा resident, क्योंकि this is resident driven. ये सुपरवाइजर ड्रिवन प्रोग्राम नहीं है, इसकी ड्राइविंग सीट में रेजिडेंट्स हैं. सो वी वुड लाइक दिस इज सॉर्ट ऑफ इनिशियल फेज ऑफ रोलिंग आउट द प्रोग्राम एंड देन योर फीडबैक and your input is going to refine it further. Otherwise it is going to be a sketchy program at the end of the day. So what are the challenges that we face and how did we come around them? Where are we at the moment? At the moment I'll not go into the details of these, लेकिन हमारा process based training program है, हमारी e-log है, लेकिन हमारी competencies की एक listing है. आपको एक list दे दी जाती है जी, खुद ही भर लें कि मैंने सूचर निकाले, मैंने ओपीडी पेशेंट देखा, मैंने एक्स्ट्रा कैप किया, मैंने फिको का ये स्टेप किया, मैंने इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी किया. एक लिस्टिंग है जो कि ऑब्जर्व नहीं होती, आपको फीडबैक नहीं मिलता उस वक्त कि जी आपने ये ठीक किया, ये ठीक नहीं किया. राइट इन द ओपीडी, in the ward or the OT, अगर ऐसे होना शुरू हो जाए in a systematic manner, this is what work-based assessment is all about. And then we all depend on the assessment of learning at the end. FCPS, IMM का इम्तिहान और FCPS का इम्तिहान. We have a 4-year training program. Luckily, I only had a 2-year training program here. उस वक्त FCPS होता ही 2 साल का था, and I did it at the end of the second year. So I was promoted as a senior registrar and a faculty here on the 4th year of my training, of my career here in Sheikh. So, and I feel so blessed to be with such teachers and mentors. So just in the passing, थोड़ी सी personal history भी साथ share करते जाना चाहिए. Self-motivating. We have a curriculum which is 4 year. We have an e-log. और ये भी बहुत बड़ा change है. हमारे ज़माने में वो hard वो होती थी किताब जिसके अंदर आप खुद हाथ से एंट्रियां करते थे. For the trainees, they should know कि हमें अपनी पॉजिटिव चीजें भी शेयर करनी है. This is an e-log that we have now, and ये हमारा summative assessment का current system है जिसके अंदर हम talks, MCQ के 2 papers, short case, long case, और इसके बाद हम certify हो जाते हैं. This is high stakes. Where do we want to go? We want to have multiple
assessment activities during the training program. This triangle is actually representing the Miller's pyramid. तो Miller's pyramid कोई intelligent student मेरे साथ share करेगा उसके levels क्या थे? You can always do that. Knows, shows how, and does. The world, आप जब teachers, trainers बनेंगे इंशाल्लाह, and with the level of presentations जो आपने कर दी हैं, मेरे जब मैं resident था मेरे से अच्छी की. So you have to talk this language. इसके बगैर आप नहीं चल सकेंगे. So this should be, ये आपको अजबर होना चाहिए सारा कुछ. So this Miller's triangle को हम revisit कर रहे हैं top के ऊपर, does पे. अब हमने तीन tools select किए हैं, OCEX, DOPS and OSCAR. Now we are coming to what actually वो जिसे कहते हैं ना the meat of the activity. And we want कि हम यहाँ पे तीनों tools को implement करें at the top of the pyramid, ताकि हमारे पास दोनों फॉर्मेट्स हों. हम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग WBA करें 4 साल में, और फिर IMM और FCPS जब वो हाई स्टेक सर्टिफिकेशन हो तो बैक एंड पे उसकी ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट हुई हो उसकी लॉ के ऊपर, इसने ये काम किए हुए हैं और कॉम्पिटेंट है इन कामों में. So that is the spirit. And ये मैंने अपनी एक presentation में जब when I was getting trained for medical education, my MCPS, I showed this. This is my diagram from those times, that formative has to populate the 4 years for it to be combined with summative at the end of the day. आप पहले ट्रेनिंग को एक लेवल पे ला के फिर असेस करें. अब सारी दुनिया में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं ऑप्थेल्मोलॉजी के, अमेरिकन रेजिडेंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम, रॉयल कॉलेज का, कैनेडियन, वो आपके पोर्टफोलियो में देखते हैं आपने WBA कितने किए हुए. ऑस्ट्रेलिया में भी अब, सो वी हैव टू बी, अभी लकीली वी कैन स्पीक दिस लैंग्वेज. अभी हम क्योंकि दुनिया भी अभी इसको बोलना और करना शुरू हुई है at the level of the college, and with the e-log we are not capable of doing it. We can join the international trends in best practices. So how do we get there? We actually focused on 3 tools. हमने 3 domains select की. आपने जिस तरह आज presentations की हैं तो आपने एक domain में काम किया है which is clinical skills. आप सब ने case presentation की है, and this is good enough to be certified. Professor और मैं नासिर साहब से भी ये करूंगा कि हम OSP में एक कल्चर डेवलप करें कि जिस मंथली क्लिनिकल मीटिंग में जो रेजिडेंट्स 4-5 प्रेजेंटेशंस करती हैं या करते हैं, आज तो फीमेल सुप्रीमेसी का दौर है तो इसलिए मैंने पहले पूछा है, पहले वो ये बात की है, और वो आप सर्टिफाई कर दें कि ये एक एक्टिविटी हो गई है, ई-लॉग पे चढ़ा दें उसको. So this is something which is practical. Lahore is very rich in this, so this can be done. This is one of the suggestions. So we selected 3 areas, और इसको कहते हैं domains. एक डोमेन, जैसे आप आउटडोर में मरीज देख रहे हैं, आउटडोर में ऑपरेशन तो नहीं ना कर रहे, तो एक क्लिनिकल स्किल्स की डोमेन है, आपने मरीज का डायग्नोसिस किया. फिर आपका एक प्रोसीजरल डोमेन है, आपने उसके ऊपर कुछ प्रोसीजर्स किए जो ऑफिस प्रोसीजर्स हैं, और फिर फाइनल कल्बिनेशन होती है आपके ऑपरेशन थिएटर में. तो आप पहले तीनों लेयर्स को एनालाइज करें कि कहाँ, इसको कहते हैं कंटेक्स्ट, किस एनवायरनमेंट में आपने कौन सा काम मरीज के लिए किया, दैट विल डिटरमिन द कंटेक्स्ट. तो हमने 3 कंटेक्स्ट में बात की, हमने पेशेंट केयर के 3 टूल्स सिलेक्ट किए, और ये तीनों टूल्स अब हमें ना, वी डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील, we don't have to make these tools afresh, ये बने हुए हैं. So how did we incorporate them? For clinical skills, this is OCEX. For procedural skills, this is DOPS. And for the surgical skills, it is OSCAR. OCEX stands for Ophthalmic Clinical Evaluation Exercise. DOPS stands for Direct Observation of Procedural Skills. And OSCAR stands for Ophthalmic Surgical Competence Assessment Rubric. ये तीनों tools भी residents जो हैं ज़रा नोट कर लें, मैं भी उनसे ये पूछूंगा कि जी स्किल, क्लिनिकल स्किल का कौन सा है, प्रोसीजरल स्किल का कौन सा है, और सर्जिकल स्किल का कौन सा है. जस्ट द नेम. In your part 2 examination, this is for the supervisors and the trainers. हम जो जजमेंट एक्सरसाइज करते हैं वो एक स्केल पे, आपने किसी को देखना ये काबिल है कि नहीं है, तो आप उसको वो जो पेशेंट को उसने एग्जामिन किया है, आप अपने 20-25 साल के एक्सपीरियंस पे फैसला करते हैं. एक जजमेंट जैसे एक सुप्रीम कोर्ट का जज आता है, वो पास करता है कि ये फैसला मैंने करना है, वो फैसला आप एक रेटिंग स्केल पे करते हैं. एंड दैट रेटिंग स्केल इन योर पार्ट 2 एग्जामिनेशंस इज दिस.
those who are supervisors and trainers, I would request their attention at this particular point कि अगर आप यहाँ पे score कर दें ना तो वो 60% लेके पास हो जाता है. अगर आप inadequate या poor करते हैं वो fail हो जाता है और यहाँ पे he is above normal. So this is adequate. This is a pass fail decision. This is high stakes. This is what we do in part 2 examination, and this is the tool or the form that we use in your part 2 examination. The forms that we use in the three tools, which is Oscar, DOPS, and OCEX, are 3-point Dreyfus and Dreyfus scale, and then Likert scale. तो ये भी कोई बहुत overarching ऐसी कोई वो नहीं है high powered technology कि आपको this is part of the every training program now. कोई भी काम आपने सीखना है, क्रिकेट सीखनी है, टेनिस सीखनी है, कुकिंग सीखनी है, पियानो सीखना है, ड्राइविंग सीखनी है, तो आप अपनी पहली इनिशियल ड्राइविंग याद करें. आप स्टीयरिंग जोर से पकड़ो, गाड़ी कभी इधर जा रही कभी इधर जा रही, दैट इज अ नोविस. और उसके बाद थोड़ी थोड़ी ग्रिप आपकी आनी शुरू हो जाती है, एंड दैट इज एडवांस बिगिनर. और उसके बाद फिर आप मोबाइल भी सुन रहे होते हैं, ड्राइव भी कर रहे होते हैं, एंड दैट इज व्हिच इज नॉट डिजायर्ड, बट दैट इज वेयर यू आर कॉम्पिटेंट टू ड्राइव. यू बिकम ऑटोमेटिक. तो स्किल लेवल में भी ऐसे होता है. देखें आपके सर्जन जो हैं वो एक नजर एक मरीज को देखते कहते हैं बस ये ठीक है, इसको ये हो गया. आतिफ साहब कहेंगे नहीं इसका बस ये टेस्ट कर लो और बस इसकी ये लिस्ट पे रख दो. और तो आपको थोड़ी द एक्सपर्ट्स हैव पैटर्न रिकग्निशन. वो इतने 20-25 साल के एक्सपीरियंस पे पैटर्न्स पिक करते हैं, जैसे चेस में भी पैटर्न्स पिक करके आप फैसला कर लेते हैं. तो अब ये केस रिपोर्ट है. फर्ज करें आप चारों रेजिडेंट्स ने जो केस प्रेजेंट किए हैं उनको मैं OCX के फॉर्म में से गुजारता हूँ. Are you with me now? तो उस फॉर्म में मैं कहता हूँ जी आपने इंटरव्यू स्किल्स, आपने हिस्ट्री ली, आपने पेशेंट एग्जामिन किया, आपने पेशेंट को एक्सप्लेन किया, फिर आपने केस प्रेजेंट किया, फिर उसको मैनेज किया. अब उसमें कोई डेफिशिएंसीज हैं तो वो लेफ्ट साइड पे एक कॉलम है जिसके अंदर सारा कंटेंट लिखा होगा. दे आर अबाउट हिस्ट्री कैसे लेनी है, एग्जामिनेशन कैसे करना है, और ऊपर इसके स्केल है वो जजमेंट वाला, नोविस, बिगिनर, कॉम्पिटेंट. और ये सेल जो है ना ये रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर विच इज पार्ट ऑफ द एनालिटिक रूब्रिक. आपने कोई काम कैसे करना है वो सेल के अंदर लिखा हुआ है, उसको आप कॉम्पिटेंस क्लियर कर. आप हवा में या अपनी सोच में फैसला नहीं कर रहे. ये फॉर्म रेजिडेंट के पास भी है, ये फॉर्म सुपरवाइजर के पास भी है, और उसके लिए एक लर्निंग टूल है कि वो मैंने ये हिस्ट्री कैसे लेनी है कंप्लीट, मैंने एग्जामिनेशन पूरा कैसे करना है, मैंने केस प्रेजेंट कैसे करना है. So this is part of the OCEX. The next tool is direct observation of procedural skills. ये Likert scale पे है. Likert scale आप restaurants में भी use करते हैं कि मैं on a scale of 5 tell me how satisfied you are, and so for that particular Likert scale you actually have the procedure here broken down. फर्ज करें intravitreal injection लगाना है तो ये उसके parts हैं कि आपने consent लिया, prepare किया, anesthesia, एसेप्सिस ऑब्जर्व किया, इंस्ट्रूमेंट सेफली यूज किए हैं, और अगर आपने ठीक किया तो यहाँ सेटिस्फैक्ट्री पे स्कोर हो जाएगा. ठीक है. और थर्ड इन दिस एरिया इज द फेको emulsification scoring rubric. This is where I started the whole project of WBAs in reverse order. This was the most complex tool for me to understand. लेकिन कंसिडर कि आपने फेको को 14 स्टेप्स जो उसके हैं वो सारे लिख दिए, और फिर माइक्रो सर्जिकल स्किल्स को आपने ग्लोबल इंडिसेस में कन्वर्ट कर दिया, और एक बिहेवियरल इंडिकेट डिस्क्रिप्टर है यहाँ पे. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. यहाँ पे फेको के सारे स्टेप्स हैं, इनको कहते हैं टास्क स्पेसिफिक इंडिसेस. ये ग्लोबल इंडिसेस है फॉर माइक्रो सर्जरी, और ये असेंडिंग स्केल ऑफ कॉम्पिटेंस है. अब मैं एक रेजिडेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे ये जरा पढ़ दें. सिर्फ कौन पढ़ेगा? जस्ट रीड इट फॉर मी. Delicate approach and confident control of the rexes, no cortex disruption. Adequate size and position for nucleus density and type of implant. No tears. Rapid unaided control of radialization. Maintains control of the flap and AC depth throughout the capsulorhexis. Thank you. And this is how you want an ideal capsulorhexis to be done. तो आई वॉज टॉकिंग टू द प्रिंसिपल कायदा मेडिकल कॉलेज, उनकी रेजिडेंट जो प्रेस सोफिया, उनकी एक रेजिडेंट से मैंने पूछा बेटा ये जो WBA टूल्स हैं
पहली तो बात ये लगती है ना, ऐसा लगता है जैसे ये कोई पीएचडी लेवल का काम है जो बड़ी मुश्किल किस्म का है। तो उस रेजिडेंट से बात करके आई वाज सो एनकरेज। वो कहती है सर एक बात है, मुझे जो ये फॉर्म आपने दे दिया है ना फेको का, तो एटलीस्ट आई नो एज अ फर्स्ट ईयर रेजिडेंट के फेको के स्टेप्स होते क्या हैं और उनको सही तरीके से करना कैसे है। That was a very encouraging feedback for me. So every trainee knows or should be certified at this level of competence. अगर आप ये और कहते हैं फेको के सीखते हुए आपको 20 से 30 रैक्सेस अंडर द बेल्ट होने चाहिए, इसके बाद फिर आप फेको में ट्रांसलेशन करते हैं। पहला स्किल सेट जो है आपका कैप्सुलोरैक्सिस ही है। इसको आप नीचे से रन कर सकते हैं वीडियो को, इसको उस कर्सर से जाके, ये यहाँ से होगी, यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। I think now I'll have a little higher speed. बस पहले 5-10 मिनट में I will wind up. ये मेरे एक हाउस सर्जन्स ने अल्लामा इकबाल में दी, मैंने उनको अपनी वीडियो दी, मैंने उन्हें ये ऑस्कर का टूल दिया और ये फिर उन्होंने नीचे इसके प्रिंट कर दिया मुझे। अब ये वही सेल है जिसमें वो adequate size and position of the nucleus density and type, no tears, rapid unaided control of radialization, and maintains control of the flap and anterior chamber depth throughout the capsular axis. This is what is known as behaviorally anchored rubric. Anchor किसको कहते हैं? Anchor किसको कहते हैं? हाँ? कल मैंने छोटा सा क्लिप एक टाइटैनिक का देखा था। एंकर इज लंगर जिसको कहते हैं ना, जहां से इतना बड़ा शिप जो है वो होल्ड हो जाता है, उसके बाद वो हिलता नहीं अपनी जगह, चाहे वो मिड सी में खड़ा हो। अगर मिड सी में भी हो तो वो बिल्कुल डेप्थ में जाके फेंक देते हैं उसे। सो बिहेवियरली एंकर्ड रूब्रिक्स जो है ना, ओसीईएक्स और ऑस्कर दोनों बिहेवियरली एंकर्ड है। बिहेवियरली एंकर्ड का मतलब ये है, ये हर स्टेप ऑफ फेको, इंसिजन कैसे लगाना है, लेंस कैसे डालना है, हर चीज यहाँ पे कॉम्पिटेंट स्कोर में एंकर के तौर पे लिखी हुई है। अगर आपने रेक्सेस अच्छा कर लिया, आपका ट्रेनर यहाँ आपको सर्कल करके आपकी ई लॉग पे टिक कर देगा, आपका WBA पास हो गया। पास तो नहीं, कॉम्पिटेंट हो गया, क्योंकि आई डोंट लाइक द वर्ड पास एंड फेल इन WBAs. So this is the ball game now. अभी भी आप the greatest success for me and the faculty and that the strategic implementation team and the Department of Medical Education was we have made it user friendly. If you open up your smartphones now, this is all on your smartphones on the e-log. That is the beauty of the whole thing. सारे supervisors और सारे trainees, ये सारे forms भी इसके ऊपर upload किए हुए हैं. I'll show you the icon now. और आपके digitize भी हुए हैं, यानी कि तीनों forms OCEX, DOPS and OSCAR के PDF version भी हैं और उनके pop-up versions भी हैं उसी form के. So that is part of a workshop that we plan to do later on because that's a whole day activity. आपने सिर्फ देखें, दूसरा हमने ये कहा कि कोई ऐसा काम करें जो, एक रेजिडेंट ने इस्लामाबाद से मुझे उठ के कहा सर ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने बनाया, ये फीजिबल भी है, ये करेगा कौन? इतने बिजी हैं वो ओपीडी के अंदर, सर को जाने का टाइम नहीं है, इतने मरीज हैं मारो मार, और सुपरवाइजर को तो मिलना ही बड़ा मुश्किल काम है, तो ये होगा कैसे? And that is where we have come up with a very fair, बहुत थोड़े से टूल्स जो आपने सर्टिफाई करवाने हैं, बेयर मिनिमम। सिर्फ 4 OCX हैं पहले 2 साल में और 8 डॉप्स हैं 4 साल में और 1 ऑस्कर है, सिर्फ ऑस्कर फेको अभी हमने उठाया है। बाहर हर हफ्ते 1 डॉप्स होता है, हर हफ्ते 1 OCX होता है। हम अभी वी आर स्टार्टिंग, वी लेट अस हैव अ बाइट साइज एक्टिविटी, इतना हम करें जो हमारी लोकल रिसोर्सेज और टाइम कंस्ट्रेंट्स में हम कर पाए। So this is available on the e-log. This is available on your smartphones. और फेको का सिर्फ मैं यहाँ एक बात करूंगा कि आपने फर्स्ट ईयर वाले से न्यूक्लियस स्कल्प्ट करवाना है बस, सेकेंड ईयर वाले से आपने क्रैक करवा लेना है और थर्ड ईयर वाले से आप पूरा प्रोसीजर करवाएं। और माइक्रो सर्जिकल स्किल सबसे पूरी करवानी है, उसको टिश्यू रिस्पेक्ट सिखाएं, उसको इंट्राओकुलर स्पेशियल अवेयरनेस, उसको सर्च, उसको कॉर्निया की रिस्पेक्ट, कैसे उसने टिश्यू को हैंडल करना है वो सिखाएं और उसको आप स्कोर करें। जब एक दफा ट्रेनिंग को आप बताएंगे ना कि ये चीजें देखने वाली हैं, इसके बगैर आप पास नहीं, कॉम्पिटेंट नहीं हो सकते, तो दे विल स्टार्ट डूइंग इट। फर्स्ट यू हैव टू
put it on paper. So this is about a relationship between a supervisor and a trainee. The most important skill that you learn is feedback and reflection. The process is resident driven. आपको e-log पे alerts होंगे, हर 6 महीने बाद एक alert आएगा. आपने relevant activity अपने supervisor और trainer के साथ खुद arrange करनी है. As I just said, both the form, आप अपने अपने PDF forms print कर लें और अपने supervisor के साथ और अपने colleagues के साथ एक दफा discuss कर लें. That is a useful strategy. It is only a 15 to 20 minutes activity with 5 minutes of feedback, which has to be documented on the e-log. And the remedial, सबसे बड़ा residents को ये होता है कि अगर ये ना हुआ और हम competent ना declare हुए तो remedial हमें मिलेगा. तो आपने 2 से 4 हफ्ते में वो remedial कर लेना है, which is practically doable and feasible. This is the slide, the most important. WAB activities वो जो मैंने आपको दिखाई हैं सारी की सारी, हमने किसी जगह इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी नहीं लिखा. ये सारे काम रेजिडेंट करता है. कोई ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी इसके अंदर नहीं लिखी जो हाई पावर्ड हो और डूएबल ना हो और फीजिबल ना हो. और फेको का सिर्फ एक ऑस्कर लिया हमने ताकि बहुत सारे नहीं लिए. This is on the e-log as work-based assessment. If you click on it, you will get all the 3 tools and the whole program. तो आज जाके सबने देखना है. और तीनों टूल्स के फॉर्म भी हैं, ICO OCX के, डॉप्स के और ICO ऑस्कर के. ICO OCX किसके लिए था? क्लिनिकल स्किल्स. और आप ऑन e-log पे तो नहीं चली गई? सर्जिकल स्किल्स के लिए क्या था? ऑस्कर. एक्सीलेंट. और इंट्राविट्रियल इंजेक्शन के लिए? एब्सोल्युटली. So the 3 tools have to be hosted on the e-log. You do the assessment and on the e-log. That is the design of the program. और अब faculty development सबसे important ये है कि तीनों tools हमने discuss कर लिए हैं. थोड़े से encounters हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं, digestible हैं. और एक और चीज़ जो हमने डिज़ाइन की है, आप अपने associate professor, assistant professor, senior registrar को enable करें. वो आपके साथ ये tools में से कोई भी tool करें, आपको फीडबैक दें, लेकिन साइन ऑफ आपका सुपरवाइजर करेगा. तो हमने टीम भी बढ़ा दी है. ये नहीं है कि आप प्रोफेसर कोई ढूंढते रहें. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ईयर 4 के रेजिडेंट से ज्यादा कंफर्टेबली सीख रहे होते हैं. आपके पास वो झिझक नहीं होती, प्रेशर नहीं होता, एंड यू आर एट लेवल विद द ट्रेनर. तो वहां से भी आप यू कैन इनकॉर्पोरेट देम आल्सो डिपेंडिंग ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सुपरवाइजर. अब हमने करना क्या है? वी हैव टू हैव अ कोचिंग माइंडसेट, वी हैव टू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट. और ये स्लाइड मुझे बहुत पसंद है, मैंने पिंडी में भी दिखाई थी. दिस इज व्हाट अ सम्मेटिव असेसमेंट इज. आपका लॉन्ग केस या शॉर्ट केस लेने के लिए आपका एग्जामिनर आधे घंटे के लिए आपको छोड़ देते हैं और फिर इस दौरान आपकी ये हालत होती है. लेकिन इसको अगर हम ऐसे कर दें और इसको अगर हम ऐसे कर दें तो हम 4 साल के अंदर कोचिंग और माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के साथ ग्रो करें पहले ट्रेनिंग को, फिर उसको डॉक्यूमेंट करें थ्रू फीडबैक, उसको शॉर्टकमिंग्स के साथ. एंड एट द एंड व्हेन यू सर्टिफाई समबडी एज कॉम्पिटेंट, दैट इज वेयर यू आर श्योर कि मैंने क्वालिटी एश्योरेंस की है. मेरा जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, मैं जब स्टेट्स में गया ड्यूक यूनिवर्सिटी में रेफरेंस ऑफ जहांगीर दुरानी साहब, तो मैंने कोशिश की कि मैं वहाँ भी कोई एग्जाम दूँ. और आई वाज देयर फॉर अबाउट ऑन अ विजिटिंग फेलोशिप. तो उन्होंने कहा मैं एक दिन भी अमेरिका में तुमने काम नहीं ना अगर किया तो तुम्हें हम इक्वेट नहीं करेंगे तुम्हारा एक्सपीरियंस. सो बिकॉज द होल प्रोग्राम इज वर्क बेस्ड असेसमेंट. आपने जब तक उनके प्लेटफॉर्म पे वो एक्टिविटीज डॉक्यूमेंट नहीं की हुई, यू कैन नॉट क्वालिफाई टू बी ए सर्टिफाइड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. सो इन द और ये जो डोमेन है ना, ये इसमें तो हम सारे अभी प्रोफेसर सलीम साहब, प्रोफेसर अरशद, नासिर, शकूर, एवरीबडी वन ऑफ अस इज ट्रैवलिंग इन दिस प्रोफेशनल प्रैक्टिस. ये तो सारी जिंदगी का सफर है. एक्सपर्टीज जो है वो 10 साल से कम में नहीं आती. और 10 साल करें या फिर 10,000 घंटे पूरे करें. तो हमने किसी को एक्सपर्ट नहीं बनाना ट्रेनिंग प्रोग्राम में. हमने उसको कॉम्पिटेंट लेवल पे, जहां पे वो ट्रस्टेबल है. अगर वो इंट्राविट्रियल इंजेक्शन लगाता है कहीं जाके, तो मुझे पता है कि मैं अपने वाले साहब को, अपनी वालदा को भी उसको दिखा सकता हूँ और वो करवा सकता हूँ और ट्रस्ट कर सकता हूँ. This is the concept of intrustability.
this I at the end of 1 year of intensive deliberations and policy planning, we were finally able to do an online workshop for the supervisors and trainers in the International Conference of Medical Education, and it was a huge success. All जो सारी बातें मैंने आपसे की हैं, in a little faster track, we discussed it in a whole day workshop. और फिर सबसे अच्छी बात यह है कि पेशावर में उन्होंने रेजिडेंट्स के साथ सुपरवाइजर ने प्रोफेसर मीर अली शाह हैं, ये उनकी एक प्रोफेसर सादिया सेठी हैं, शी इज सो एनर्जेटिक। और ये इट अपटेक इसका अगर डिजाइन आपने अच्छा बनाया है किसी चीज का और यूजर फ्रेंडली है तो उसका अपटेक बहुत फास्ट होता है। So that is the whole idea of making this WBA program. So we have to have supervisor training, we have to trainer training, and we have to have a team-based approach. ये चीज आपने अब याद रखनी है कि कॉलेज ने ये नोटिफाई कर दिया हुआ है, अब जनवरी 2024 से ऑनवर्ड्स आपने ये WBAs करने ही करने हैं. So better get going with these activities. और एक और बहुत बड़ा चेंज मैं समझता हूँ कॉलेज की तरफ से, वो ये है कि dissertation from 2025 onwards will be replaced by a research paper. And that also is a huge change. आपको एक आर्टिकल लिखना तो आएगा जो आपने पार्ट जब आपने स्लॉट्स लेनी होती है पीजी स्लॉट्स उसमें, और फिर आपके करियर के अंदर पेपर राइटिंग इज सच ए ह्यूज क्वालिफिकेशन. तो ये मुझे याद है जहांगीर दुरानी साहब जब आए थे तो उनके पास 5 से 10 साल के अमेरिकन जर्नल ऑफ थर्मोलॉजी थे. अभी भी आप शेख ज़ैद की लाइब्रेरी में चले जाएं तो वो ग्रीन हार्ड बाउंड AJO की कॉपीज अभी भी पड़ी होंगी. So this is how you relate to the vision of your trainers and trainees, and we used to read them, use them for our dissertation. So journal club and WBA tools are two of the changes. These are some of the references. अब ये स्लाइड भी उसी स्लाइड की तरह मेरे लिए बड़ी प्रेशस है कि हम वही कहते हैं, टाइम नहीं है, मरीज बहुत ज़्यादा हैं, आउटडोर बहुत हैवी है, प्रोफेसर पे कई मीटिंग्स अटेंड करनी है. These are the tumultuous waters in which we as professionals and doctors work throughout our life. But this is where we have to set our direction. And when the winds are strong, you have to set the direction of your sails. You have no other choice but to set the direction of your sails. From the past, I just came upon this picture. और डॉक्टर मेमुना अभी भी ऐसी हैं, आप सारे सर्टिफाई करते हैं ना? तो विद प्रोफेसर जहांगीर दुरानी, माई सेल्फ, डॉक्टर मंजूर, ये डॉक्टर तारिक हैं, ये अब्बासी हैं, ये कराची से थे, डॉक्टर अशरफ, और इनका नाम मुझे नहीं आ रहा, मैं याद होगा. This is when the same place where I entered today, so it was a very emotional moment for me. But I शुक्र अल्लाह का कि I'm here in front of you in talking about this undertaking, and so satisfied for this is for the future. This is dedicated to the residents sitting on the back benches. Thank you very much. And I also owe to the CPSP Department of Medical Education and National Teacher Training Center. Those of you who have scholarly pursuits can go for your NCPS Health Professionals Education. And all of them, जो आप faculty बनना चाहते हैं, I would strongly urge कि आप ज़रूर वो करें. It's a very good program. Many of my class fellows in that program were my residents. In those, you understand, वो खुद प्रोफेसर बन गए हुए थे और मेरे क्लास फेलो थे. उनमें एनेस्थीसिया वाले भी थे, डर्मेटोलॉजी वाले भी थे. It's a very good program. So with these words, I thank you very much, and especially for your patience, because I know it's a bit of a heavy talk. I took my time and try to simplify it. वो कहते हैं ना, complexity से simplicity पे आना बड़ा मुश्किल काम है. कांटों में से गुलाब को निकालना बड़ा मुश्किल काम है. अर्शद साहब शेर भी कह सकते हैं. Thank you very much. Sir, thank you very much for this very good elaborative lecture regarding workplace-based assessment, and this is now the futuristic training. So, if the audience is having any questions or queries related to this lecture, मैं सिर्फ 2-3 चीजें शेयर आपसे, ये कि मुख्तलिफ जगह पे जब जाता रहा ना, तो एक तो वो रेजिडेंट ने उठ के कहा कि जी ये हो भी सकता है कि नहीं, फिजिबल है, ये बता तो आप रहे हैं. दूसरा, मुझे उस रेजिडेंट ने कहा कि जी ये मुझे एक लिस्ट मिल गई है फेको की, मैं सारा इसको पढ़ सकती हूँ.
एक हैदराबाद में एक मीटिंग में थे, वहाँ एक बारिश बुजुर्ग थे, वो नमाज पढ़ के आ रहे थे थोड़ी बहुत, तो मेरे पास आए एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप, मुझे कहने लगे डॉक्टर साहब आपने एक काम किया, आपने सुपरवाइजर और रेजिडेंट्स के फासलों को कम करने की कोशिश की है। वो भी बहुत अच्छा कमेंट था। और एक शुरू में जब मैं कोयटा में गया तो एक वो कराची में है न्याजी साहब, इज ऑर्बिटल सर्जन है, तो वो मैंने फेको की जब पहली प्रेजेंटेशन की ना, तो इट वाज सो, फॉर मी इट वाज वेरी हार्ड प्रेस, आई वाज वेरी हार्ड प्रेस कि मैं उसको कैसे फटाफट बताऊं और इसके स्टेप्स कैसे कन्वे करने हैं। तो मुझे कहने लगे गरीब दा बाल थक गया है। Dr. Nasir, would you like to say something on the behalf of OSP Lahore? I thank all the audience, all our respected colleagues, juniors and seniors for attending this clinical meeting, and also congratulate all my trainees for giving such good presentations. Now hand over to Dr. Nasir Chaudhary for both of them. Thank you. Thank you very much, sir, for your words of wisdom. And there is always something new to learn from Professor Hamad Bhatt साहब. और मुझे आई ऑलवेज टर्न टू रिफ्लेक्ट माई सेल्फ. तो सर से मिलके एक हमेशा आप ये कह लें कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपने आप को एनर्जाइज करो इन दैट रिगार्ड कि आई हैव टू डू समथिंग मोर फॉर माई ट्रेनीज. और जिस तरह सर ने बात की कि रावलपिंडी से फीडबैक आया, उधर से हैदराबाद से फीडबैक आया, मुझे लगता है कि जो फॉल्ट है, आई हैव सम रिग्रेट्स विद दिस सिस्टम, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारी टीचिंग एंड ट्रेनिंग है उसमें जो फॉल्ट लाइज ऑन द साइड ऑफ सुपरवाइजर्स. और जाहिर है ऑफ कोर्स जिस तरह आपने कहा, सर ने कहा कि जी जिससे कम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन दोनों साइड पे है और रेजिडेंट ड्रिवन मोर है, लेकिन ऑफ कोर्स अपने सुपरवाइजर्स ने भी अपने आप को और मोटिवेशन चाहिए कि टू प्ले देयर सिग्निफिकेंट रोल. और थैंक्स अगेन टू प्रोफेसर हामिद भट्ट साहब. उसकी रीज़न ये है कि जो मैनी ऑफ द माई ट्रेनीज जो आईसीयू आस्कर पे वो ये करते थे, जो मोबाइल ऐप है जो आईसीयू आस्कर की, उस पे ये ग्रेडिंग करते थे अपनी सर्जरी की. तो अब इन्होंने सर ने इसको दे हैव मेड इट पार्ट ऑफ करिकुलम. तो द ऑफ्थेल्मिक कम्युनिटी एज वेल एज आई थिंक, मेरा ख्याल है कि हमारी जो होल जो एजुकेशनल जो लाट है, दैट विल एवर रिमेन इन डेट टू सर एंड अदर फैकल्टी जिन्होंने इस करिकुलम को मॉडिफाई किया. और ऑफ कोर्स जिस तरह बात हुई असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग या असेसमेंट फॉर लर्निंग या असेसमेंट ऑफ द लर्निंग, ये वो चीज़ें जिस तरह मैं बात कर रहा था कि ही इज़ वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन. और ये चीज़ें ऑफकोर्स जिस तरह मैंने बात की कि मुझे रिग्रेट होता है और मुझे मिल के ही होता है कि आई हैव टू डू समथिंग मोर. इस तरह हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमारा टीचिंग और ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है वो बेहतर हो सकता है. तो बाकी ये कि एज रिगार्ड्स ऑफ हमारी जो आज की क्लिनिकल मीटिंग थी, एक तो ये कि हमें रिसेंटली ज्वाइन किया मियाँ अफसल साहब ने, फिर दो इरफान सकेर, इरफान करामत, इरफान मुस्लिम, आयशा और सर मियाँ मुख्तार साहब आए. वी आर ग्रेटफुल. इतनी माशाल्लाह जैम पैक किस्म की जो एक अच्छी साइंटिफिक एक्टिविटी. और there should be a big round of applause for Professor Atif Mansoor and the whole teaching faculty of Sheikh Zayed. कि जी 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 नहीं नहीं सर, आप अभी फिक्र ना करें, ये तो सीधी सी बात है कि ये दरमियान में पड़ गए हैं. हमारा तो ये था कि बहुत बड़े बड़े शोज पे, बड़े बड़े शोज पे हमने इंशाल्लाह भी आपको करना है, क्योंकि मेरा खुद पैशन है कि मेडिकल एजुकेशन को हम आगे लेके चलें इन माय हम्बल डोमेन. तो बाकी ये कि अगेन देयर शुड बी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रोफेसर आतिफ, डॉक्टर इरम एंड एंटायर फैकल्टी कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की माशाल्लाह इन्होंने जो साइंटिफिक जो सेशन है, क्लिनिकल मीटिंग अरेंज की. और ऑल दो इट वाज ए नेल बाइटिंग एक्सपीरियंस फॉर द जजेस के उनको मार्क करना, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन थी. तो अगर मैं एक मिनट के लिए, क्योंकि डॉक्टर हमेरा अहमद एंड डॉक्टर शुबाना दे हैव बीन पार्ट ऑफ अवर टीचिंग फैकल्टी, जो हमारी जो डिफरेंट जो किंग एडवर्ड में स्पेशली जो वर्कशॉप्स होती थी, चाहे वो रिसर्च की थी, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल की थी, तो उसमें जस्ट ए मोमेंट, एक मिनट के लिए अगर आप फीडबैक दे सके डॉक्टर हमेरा, आप अगर इधर बैठे बैठे चाहे या खड़े खड़े बता दें.
ये रेजिडेंट के लिए भी और सर आतिफ साहब के लिए भी दिल बी सॉर्ट ऑफ एनकरेजमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नासिर। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, सारी बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट किया हुआ था। द वे दैट यू एग्जामिन द पेशेंट और सारी जो आपने क्लिनिकल सिनेरियो को इन्वेस्टिगेशंस के साथ जोड़ा एंड द प्रैक्टिस इट वाज बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। और मल्टी डिसिप्लिनरी टाइप था कि मतलब यू हैड रेटिना फिर देन यू टच द कोरॉइड, इट वाज आल्सो वेरी गुड। और प्रेजेंटेशन में ये है कि आप प्रैक्टिस आपकी बहुत थी और सारे रेजिडेंट्स दे आर मोर कॉन्फिडेंट एज वी यूज्ड टू प्रेजेंट इन आवर ईयर्स। सिर्फ एक मैसेज सिर्फ ये है कि दिस इज टाइम बार्ड प्रोग्राम। अगर एमएस है या एफसीपीएस है, इट्स अ टाइम बार्ड प्रोग्राम, 4 इयर्स का है। तो यू हैव टू टाइम योर सेल्फ कि फर्स्ट 2 इयर्स में आप 2 साल के बाद यू हैव टू अपियर फॉर योर एफसीपीएस, आईएमएफ और एब्रिज के लिए। तो 4 साल में ही आपने अपना सनॉप्सिस भी कंप्लीट करना है और अपनी डिसर्टेशन भी एंड अपनी सारी चीज। तो यू दिस इज रेजिडेंट ड्रिवन, ये फेलोशिप आपकी है। आपके सुपरवाइजर्स जो हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट खुद करनी है कि यू कंप्लीट दिस इन 4 इयर्स। क्योंकि जिस एरा में आप लोग हैं ना उसमें आपको यू हैव और टू हैव अ सेकंड फेलोशिप एज वेल। तो आप यू हैव टू टाइम योर सेल्फ कि हमें बताया ही नहीं गया क्या, ये आपने करना है। और ये जो WBAs है ना, ये अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है वो भी इम्प्रूव होगी, आपकी सर्जिकल स्किल्स, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी वैल्यू सिस्टम और बिहेवियरल स्किल्स है। Your attitude towards patient, whatever you're doing in your OPDs, in your OTs, the same you replicate when you sit for your part 2 exam। आप पार्ट 2 एग्जाम में वाइवा में भी वही कुछ कर रहे होते हैं। और टेक होम मैसेज जो आपकी प्रेजेंटेशन से जो आपने यहाँ बताया कि फॉलो अप इज इम्पॉर्टेंट व्हेन यू सिट फॉर योर वाइवा फॉर द लॉन्ग केस। उसमें आपने सारी एग्जामिनेशन बता के जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ इंटरडिसिप्लिनरी आपने टच ज़रूर करना है। र्यूमेटोलॉजिस्ट से बात करेंगे, जो रेडियोलॉजिस्ट को इंटरवीन करेंगे, और साथ आपने फॉलो अप का ज़रूर बताना है। थैंक यू वेरी मच फॉर डॉक्टर इनवाइटिंग शबाना, मी। अगर जस्ट मोमेंट के लिए अगर आप भी अपना फीडबैक। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त, बहुत इम्प्रेसिव केसेस और बहुत इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन थी। मेरा ख्याल है ऐड करने के लिए तो मैडम ने भी कर दिया कि हमें अ, जो फ़र्ज़ होता है ना नमाज में वो सब ने अदा करना है। तो फिर तकवा क्या है, वो जो हम एक्स्ट्रा करते हैं। तो यहाँ पे जो हम ड्यूटी देते हैं उसमें जो हम कर रहे हैं वो तो सबने करना ही करना है, क्योंकि दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी। तो एक्स्ट्रा क्या है, वो वही है जो मैडम ने अभी मेंशन किया कि हमारा बिहेवियर, हमारी एम्पैथी, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स द पेशेंट। हम अपने अपने पेशेंट्स को ओन करें और एंड तक लेके जाएं। अगर आप इवन अपनी पर्चियों के ऊपर फॉलो अप लिखते हैं तो आप ये ना लिखें कि 2 महीने बाद आ जाना, उसको डेट और टाइम दें ताकि उसको पता हो कि मैंने ये आना, क्योंकि वो बेचारा कहाँ से आ रहा है और कहाँ से उसने मैनेज करना है। ठीक है, हमारे पब्लिक सेक्टर में ये अभी चीज़ें अभी नहीं है, हमारे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में। तो आप पेशेंट को ऐसे ना कह दें कि रोमाटोलॉजी वाल चला जा, आप उसे गाइड कर दें कि फलां जगह पे जाओ, ये कमरा ये दिन है। हम बीइंग रेजिडेंट्स, बीइंग डॉक्टर्स हियर वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अगर आप रेजिडेंट 4 साल से रेजिडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके डिपार्टमेंट में कहाँ में पेशेंट को किस कमरे में कौन सा ओपीडी हो रहा है। नहीं तो अपने अपने ओपीडीज में नंबर लगा लो कमरों के, ताकि पेशेंट को आप गाइड कर सको, क्योंकि ये दिस इज एक्स्ट्रा। दैट्स वेरी ग्रेट, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ये इसमें प्रेजेंटेशन में नजर भी आ रहा था, ये आपके जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे थे उसमें नजर भी आ रहा था कि आपका हार्ड वर्क और आपका जो उसके साथ लगाव है अपने प्रोफेशन के साथ, वो हमें नजर आ रहा था। बाकी टेक्निकली जो है बहुत अच्छी वो थी पीपीटी, अगर हम कहें कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। लेकिन अब थोड़ा सा मैं उसमें एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि विंडो 97 के डिज़ाइनर से बाहर आ जाओ। ठीक है,
आप जो है अगर आप गूगल पे जाइए तो आपको फ्री टेम्पलेट्स बहुत मिल जाते हैं, तो रेलेवेंट फ्री टेम्पलेट्स को आप करें। अब एआई भी आ गया है। दूसरा चीज़ में प्रोफेसर तैयबा गुल ने जो किया, कमेंट किया था, मैं उसको इंडोर्स करूंगी। अपने पेशेंट्स, देखिए वी ऑल हैव दीज फोन्स, ठीक है, पेशेंट से कंसेंट लीजिए और उस कंसेंट को वर्बल कंसेंट, क्योंकि अभी हमारा रिटन कंसेंट का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, आप रिकॉर्ड कर लें वर्बल कंसेंट, ताकि अगर कहीं पे लीगैलिटीज में पढ़ने की वो हो तो आपके पास हो जी ये वर्बल कंसेंट है पेशेंट का मेरे पास। और उनको बताएं कि हम एकेडमिकली आपका हम कर सकते हैं, उसके बावजूद भी आप जो उनकी पिक्चर्स लें उसको आप ऐसे करें कि अनआइडेंटिफाइबल हो, ठीक है, आप सिर्फ आंखों की पिक्चर्स ले लें और वो साथ साथ करें। क्योंकि अब क्या हुआ है, अब मैंने अभी रिसेंटली एआई का कोर्स किया और हमें जो उन्होंने असाइनमेंट दिया था वो ये था कि एआई से कहें, जीपीटी से कहें कि आपको एक आर्टिकल लिख दे, और वो मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए, उससे पूरा आर्टिकल लिख दिया। अब विदाउट द फोटोग्राफ्स ऑफ द पेशेंट मुझे क्या पता कि आप ये जो बता रहे हो बेटे ये एआई से जनरेट करके आपने एक वर्चुअल पेशेंट क्रिएट कर दिया, उसका क्या सबूत है? अदालत तो सबूत मांगती है ना। तो हमें आप पेशेंट्स की जो पिक्चर्स हैं वो ऐड करें, और दूसरा उसको ऐड करने के साथ साथ ये है कि जो आप बता रहे हो पिक्चर का वो उसके साथ पिक्चर साइड बाय साइड हो। ऐसा ना हो कि आपने जो है लिखा एक साइड स्लाइड पे और पिक्चर आगे दिखा रहे हैं, या पिक्चर पहले दिखा दिया लिखा हुआ बाद में पढ़ रहे हो। तो साइड बाय साइड होगा तो जो ऑडियंस है, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, वो भी इसको रिलेट कर सकती है। इन शॉर्ट बहुत जबरदस्त था, वेरी गुड, कीप अप द गुड वर्क, थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और ये बेसिकली रेजिडेंट का ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक था। तो अगर वो फीडबैक कहते हैं, अगर उसकी जो इफेक्ट फीडबैक है वो बढ़ जाता है अगर उसका फॉर्मेट और जो सोर्स है वो क्रेडिबल था। तो तुम्हारे सोर्स जो वो क्रेडिबल थे, तो ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक था। अच्छा, अब ये कि अगेन इस क्योंकि शेख ज़ायद में क्लिनिकल मीटिंग है, तो वो डेफिनेटली लाइक टू पे ट्रिब्यूट टू अवर लेजेंडरी प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर। वो हम में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम ता फरमाए। अब ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा मियां अरशद साहब हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं कि वो अनाउंस कर दें पोजीशंस। जी अस्सलाम वालेकुम। ये रिजल्ट अनाउंस करना ऐसे ही होता है जैसे शाम को वो रिजल्ट मिल रहा होता है, सीपीएसपी कराची बैठे होते हैं लोग, वो एक पर्चा सब पकड़ाते हैं, फिर इट्स ऑलवेज जो रिजल्ट अनाउंस करने वाला होता है उसके लिए भी एक थोड़ी सी फीलिंग होती है कि कोई हर्ट ना हो रहा हो। लेकिन एनी हाउ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, वेल टेकन केसेस, इनोवेटिव थे, सारा आप लोगों ने बड़ा अच्छा उसको इन्वेस्टिगेट किया, फिर उसको आपने मैनेज किया, और इंटरडिसिप्लिनरी जो कोलैबोरेशन थी इट वाज वेरी गुड। तो अब जो है बड़ा मुश्किल था, जैसे उन्होंने कहा नेल बाइटिंग तो हमने नहीं की, बस हाथों को संभाल के रखा है। तो वो भी इसी तरह आते हैं। तो फोर्थ पोजीशन पे है डॉक्टर सुमैया बलोच। एंड प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड सी योर। नंबर थर्ड पे है डॉक्टर खदीजा जुनैद, और सेकंड पोजीशन है डॉक्टर खिजरा इमरान। और मुझे वो मौला जट का याद आ जाता है इसमें। मैं पहले यही समझ रहा था कि ये कोई मुजाहिद होगा मुल्ला के नाम से। जब वो आई है स्टेज पे कैंडिडेट तो इट वाज रियली गुड। तो वो है ना, मौले नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा, तो शी इज द विनर। प्लीज डॉक्टर मोल्ला। अच्छा, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने जो हमारे टीचर्स हैं, पहले तो प्रोफेसर सलीम अख्तर साहब और आतिफ साहब बीइंग द होड, और प्रोफेसर हामिद भट्ट साहब, ये आ जाएं स्टेज पे आ जाएं।
आपने जो पहले हम फोर्थ से शुरू कर लेते हैं, फोर्थ से सुमेरा, इनको अच्छा सुमैया सारी। सेकंड पे जी खदीजा, सॉरी थर्ड पे खदीजा है। सेकंड हिजरा। और फिर एंड पे मोहल्ला। नहीं खिदरा बोल दिया मैंने, खिदरा नहीं हो गया, खदीजा भी हो गया, खिदरा नहीं खिदरा। मोहल्ला आ जाए जी। मैंने तो यार इसको अरशे मोहल्ला से लिया था। अब मैं प्रोफेसर सलीम अख्तर साहब से आतिफ साहब खड़े हैं, और आतिफ साहब से मियां अरशद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे एक गेस्ट स्पीकर, उनको एक बोके पेश करें। ठीक है। मैं ये करवाया था फिर आपसे, नहीं वो तो पहले। अच्छा आज फिर आज माइक किधर है? आपका टाइम रखा हुआ था। इट्स ऑलराइट। मैंने फेलोशिप की थी 40 साल पहले, और आज की ये सारी डिस्कशन और प्रेजेंटेशन के बाद मुझे लगता है कि मुझे दोबारा करनी चाहिए, आउटडेटेड हो गई है। तो भाई बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों ने सबने प्रेजेंटेशन की है, वेरी गुड, कीप इट अप एंड बेस्ट ऑफ लक। आज सर इधर आपने पेश करना है, आपने तीनों ने, सर अहमद साहब को। अच्छा अब मैं अब तीनों से सर अहमद साहब आप इधर ही रुके, आप तीनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि माशाल्लाह आतिफ साहब ने बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह जी जी। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इरम आप भी आ जाएं। ठीक है, जायमा या बाकी लोग ठीक। ठीक है, तो मैं सर आपने आतिफ 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 साहब को प्रेजेंट करना बोके, इधर दे देना। नहीं नहीं सर को भी साथ साहब ऐसे। डॉक्टर शिबाना जो हमारी रिसेंटली प्रमोट हुई हैं एसोसिएट प्रोफेसर थ्रू पीपीएससी, तो उनके लिए भी हमने एक बोके का अरेंजमेंट की है। मीनवाइल इरफान मुस्लिम और इरफान करामत आप इधर आ जाए दोनों। बोके हमारी जो एक्स फैकल्टी जो इसमें डॉक्टर ममूना और मेजर साहब, आप लोग आ जाएं। एक हमने वो के उनको भी देना है, हमारी एक्स फैकल्टी स्टिल पार्ट ऑफ, ये भी आपको आ जाए मेजर साहब। मियाँ साहब आप भी आ जाएं, सर आप भी आ जाएं, ये लाएं, आ जाए सर आप, मुख्तार साहब आ जाए, डॉक्टर ममूना आप आ जाएं आप, ये मेजर शाहिद साहब को और डॉक्टर ममूना, मेजर शाहिद साहब और डॉक्टर ममूना को। नहीं ये शी इज ऑलवेज टेकन एज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फैकल्टी ऑफ। और अब
जो नईम साहब और उनकी टीम जो है इस दफ़ा जी अच्छा अच्छा जो नईम साहब जो एलर्गन हैं इनकी टीम ने हमारा कन्वेंशनली जिस हमारे जो हमें जो नॉर्मली फूड सप्लाई करते थे तो उन्होंने कहा जी कि हम उनसे नहीं एक अच्छी जगह से अपने आपका आज खाना अरेंज किया है तो उनके लिए नईम साहब आ जाएं आप आपको भी एक हाँ ये इनको अभी पेश कर दिया जाए या जी खाना खाने के बाद हाँ जी जी सर अहमद साहब हमेशा हमारे साथ रहते हैं पैटर्नाइज करते हैं अब मुझे नहीं पता था कि उन्होंने गेस्ट स्पीकर के लिए भी वो शील्ड भी रखी हुई है तो वो सर जरा आप दे दीजिएगा चलें थैंक यू वेरी मच एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज साइंटिफिक सेशन और अब मेरे लिए खाना खुल गया जी चलें ठीक है चलें थैंक यू